So, hello everyone again into the part 3 of the chapter Biodiversity and Conservation. This chapter has so many parts, it's only because, I have not enough space in my phone and I cannot use the whole video. So, that's the reason. So, let's move on. Okay. So, where were we? We were, I think, here, like alien species invention topic. And we were reading one of the four major causes of the loss of biodiversity. First was the habitat loss and fragmentation. Second was the overexploitation. Third is what we are reading, alien invention, and the fourth is coextinction. Coextinction. Okay. अच्छा, एलियन स्पीशीज इन्वेंशन में एलियन आपको बता दिया था कि एलियंस क्या होते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय एलियन इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस टर्मिनोलॉजी. अच्छा, now when alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive. ठीक है, देखो एलियन स्पीशीज हमने इंट्रोड्यूस तो करी, बट वो इन्वेजिव हो या ना हो ये डिपेंड करता है. कुछ स्पीशीज़ इन्वेजिव होती हैं, कुछ स्पीशीज़ नहीं होती हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्वेजिव हैं कि नहीं. इन्वेजिव मतलब क्या होता है, जैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल करा था, इंडिया के ऊपर फॉर 200 years. दैट वाज इन्वेंशन विदाउट अवर परमिशन, विदाउट अवर इंटेंशन. सो दैट वाज कॉल्ड इन्वेंशन. ओके, and it can be unintentionally also and it can be deliberately also cause decline or extinction in the indigenous species. ये क्या है? indigenous species. ठीक है, indigenous means your local species. The Nile perch introduced into the Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecological unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. तो नाइल पर्च जो थी वो एक एलियन स्पीशीज़ थी, उसको इंट्रोड्यूस करा गया इनटू द लेक विक्टोरिया. विच लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका में. जो उससे क्या हुआ? एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक assemblage of more than 200 species of the cichlid fish. Now this is an indigenous fish and this is an alien species. Okay, so it's a cichlid fish and the Nile perch. Remember it. You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to a native species by invasive weed species. Invasive weed species भी होती हैं, like carrot grass, जो कि पार्थेनियम हमने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था कि इट हैज़ पोलन. नो उससे एलर्जी कुछ होती थी इस प्लांट से, सम ऑफ, है ना. लैंटिना, वाटर हायासिंथ, इकॉर्निया, ये सारे प्लांट्स हैं इन्वेजिव वीड स्पीसीज के एग्जाम्पल्स. ठीक है, द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश. इलीगल, देखो यहाँ इलीगल लिखा है. इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरी पाइनस. सो इट्स अ नेम, क्लैरियस गैरी पाइनस. इट्स अ अफ्रीकन कैटफिश. ठीक है, इट्स अ कैटफिश फॉर द एक्वाकल्चर पर्पज़. देखो हमेशा कोई ना कोई पर्पज़ होता है, इसलिए एलियन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है. इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस स्पीशीज़ जो कि कैटफिशेज हैं इन अवर रिवर्स. फोर्थ पार्ट इज द को एक्सटिंक्शन. व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इन ऑब्लिगेटरी वे. ना इसमें आता है एक म्यूचुअलिज्म जो आपने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर नहीं समझ आने वाला. ऑल्दो ये लास्ट वीडियो है, बट मैंने ये सेम फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि है सम की वर्ड्स और सम टेक्निकल टर्म्स आर मोस्टली रिलेटेड टू दैट चैप्टर. सो फर्स्ट रीड दैट. वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन अ होस्ट फिश species become extinct, है ना. its unique assemblage of parasites also made the same fate. अगर कोई फिश एक्सटेंट हो गई तो उस पर जो पैरासाइट्स लगते थे वो भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो सेम फेट होगी. अनदर एग्जाम्पल इज द कोई वर्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म. ओके, प्लांट और पॉलिनेटर. प्लांट खत्म हो गया तो पॉलिनेटर क्या करेगा, पॉलिनेटर खत्म हो गया तो प्लांट नहीं जी पाएंगे, है ऐसे ही. अच्छा, तो हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ओके,
अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें हमारी एनसीईआरटी ने कि वाई वी शुड एंड हाउ वी शुड। ठीक है, आई होप इट इज़ फोकसिंग। Yeah. So first question is, why should we conserve biodiversity? Now there are many reasons. Some obvious and others not so obvious, but all equally important. Okay, they can be grouped into 3 categories. Wait. There are many reasons, some obvious and others not so obvious, but equally important. They can be grouped into 3 categories. कौन कौन से 3 categories बताइए हमें। ठीक है, एक तो हो गई नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है, एक हो गया ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन whatever you pronounce, and your third is ethical. ठीक है, the narrowly utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. ये कह रहा है कि ये obvious हैं, क्यों? क्योंकि humans derive countless direct economic benefits, है ना, from nature. Food हो गया, food में cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial products, tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and products of medicinal importance. है ना, more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world. Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored, with increasing resources put into bioprospecting, underline it. अच्छा, I've always told you कि underline or highlight whatever I had. Okay, so I'm not gonna always tell you to particularly do this, do that. Okay, exploring. अच्छा, what is bioprospecting? Exploring molecular, genetic, and species level diversity for products of economic importance. This is bioprospecting. So it can come कि what is bioprospecting? So you would write this information. This definition, that it is the exploring molecular, species, and genetic diversity for the economic importance, for the products of economic importance. Nations endowed with rich diversity can expect to reap enormous benefits. ठीक है, okay. So the second thing is the broadly utilitarian argument say that biodiversity. अच्छा, इसमें क्या था mainly कि we get a lot of economic benefits, है ना। इसमें क्या है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन द मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। अब इकोसिस्टम सर्विसेज भी होती हैं कुछ, तो देखते हैं। Okay. Okay, dwindling. Okay, what is this? Dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis. हमें अमेजन फॉरेस्ट से कितनी परसेंट ऑफ टोटल ऑक्सीजन मिलती है? दैट इज 20%. Can we put an economical value on this service by nature? No. You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen. Pollination, without which plants cannot give us fruits or seeds, is another service ecosystem provides through pollinator layers. Bees, bumblebees, birds, bats. What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinators? There are other intangible benefits, intangible benefits, which that we derive from the nature. The aesthetic pleasures, the aesthetic pleasure, these are the feelings, they are intangible, they're not touchable. Or walking through thick woods, watching spring flowers in a full bloom, or walking up to a bulbul's song in the morning. Can we put a price tag on such thing? Obviously no, na.
Third reason is that the ethical argument. Third is the ethical argument. The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to million of plants. है ना? We owe something. Nature gives us, in return we should also. So that's why it is the ethical reason. Animal and microbe species with whom we share this planet. Philosophical, spirituality, कैसे भी मानो, we need to save our biodiversity, है ना? We need to realize that every species has an intrinsic value and we have the moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation, है ना? Future generation के लिए भी अच्छा रहे, तो इसलिए भी हमें सेव करनी चाहिए. तो ये था आपके 3 कि why should we conserve the biodiversity. These were 3 ways to realize the human race, that how and where we are lacking. Now there are 2 ways. Okay. Now there are 2 ways in how we can conserve. And these are how do we conserve topic. Okay. So when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger. Now this approach is called in situ conservation. कौन सा अप्रोच क्या बोल रहा है ये पढ़ो. अगर हमें टाइगर सेव करना है तो हम पूरा फॉरेस्ट सेव कर रहे हैं. व्हाट इज इट? इट इज़ ऑन साइट कंजर्वेशन. जिसे टाइगर वहाँ पे मिलता है और वो एक्सटेंट होने वाला है, हमें पता लग गया है, तो हमें उसको सेव करना है. तो हमने पूरा वहाँ फॉरेस्ट बना दिया. एंड फॉरेस्ट में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आती है, विद इट्स प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, व्हाटएवर, तो वो सब कंजर्व हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन. However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, facing a very high risk of extinction in the world in the near future and needs urgent measures to save it from extinction, है ना? So ex situ conservation is the desirable approach. अगर बहुत ही ज़्यादा endangered है और threat है world in the near future, तो जब हम क्या लेते हैं, ex situ ऑफ साइट कंजर्वेशन, उसको कहीं और जाके कंजर्व कराना. ठीक है ना? वो होता है ऑफ साइट. Inside conservation, जैसे कि faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. है ना? सब कुछ तो कंजर्व करना बहुत ही हाथ के परे है. So invariably, अगर मैं बोलूँ, the number of species waiting to be saved exceeds the conservation resources available. So on a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspots. Yes, regions with a very high level of species recognized and a degree of endemism. Endemism. What is this endemism? That is species confined to that region and are not found anywhere else. ये species सिर्फ यहीं मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती. So this is called the endemism. Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to the 34. 34 biodiversity hotspots. So we're going to learn this part. Okay. These hotspots are also the region of the accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, अगर मैं बोलूँ कहाँ पे हैं, तो एक तो वेस्टर्न घाट्स में हो गया, एक श्रीलंका हो गया, एक इंडो बर्मा और एक हिमालय हो गया. तो यहाँ 4 बताए हैं. कौन सा? एक हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स, एक श्रीलंका, एक इंडो बर्मा और एक हिमालय. ठीक है. Cover countries exceptionally high biodiversity regions, although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area. The number of the species that collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. ये reduce कर सकता है almost by 30%. In India, ecological, unique and biodiversity-rich regions are legally protected as biosphere reserves, national parks. अच्छा
Let us underline these things. Okay. Biosphere reserves, national parks, sanctuaries. India now has 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ये इंडिया की है, ठीक है, ये इंडिया की हैं. कौन कौन सी? 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. India has also a history of religious cultural tradition that emphasized protection of nature, and many cultural tracts of forest were set aside, and all the trees and wildlife within were entertained, given total protection. Such sacred groves जो होते हैं ना, मतलब जो रिलीजियस पीपल करते हैं, तो दे आर फाउंड इन खासी इन जयंतिया हिल्स इन मेघालय, रवेली हिल्स ऑफ राजस्थान. अच्छा, जयंतिया हिल्स कहाँ पर मिलते हैं? मेघालय में. वेस्टर्न घाट्स के कर्नाटका, महाराष्ट्र, सरगुजा, चांदा, बस्तर एरियाज ऑफ द मध्य प्रदेश. इन मेघालय द सैक्रेड ग्रोव्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स. ठीक है. नाउ वी कम टू द मोस्ट awaited topic, ex situ conservation. In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat. उधर से कहीं और ले जाते हैं ना, एंड द प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड, गिवन स्पेशल केयर. जैसे एग्जांपल्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारीज हो गई, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए. For this purpose, there are many mammals that have become extinct in the wild, but continue to be maintained in the zoological parks. In recent years, ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species and enclosures. Now, gametes can be preserved and viable. अब तो gametes भी preserve होते हैं for long periods using cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro. Plants can be propagated using tissue culture methods. Seeds of different genetic strains can be kept for long periods in seed banks. Now, biodiversity knows no political boundaries. We all know. है ना? This is a special line. It can come as a question also. Biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore a collective responsibility for nations. है ना? ये सिर्फ एक कंट्रीज़ का नहीं है कि तुम्हारे कंट्री में है इतनी स्पीशीज एंडेंजर तो आप ही करो उसका. नो, इट इज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस. The historic convention, अच्छा, this is whole is important. Okay. The historic convention on biological diversity, the Earth Summit, पहले हुआ था Earth Summit, held in Rio de Janeiro in 1992, called upon the nations to take appropriate measures for the conservation of biodiversity and sustainable utilization. In a follow-up, the World Summit बाद में हुआ था 2002 में on a sustainable development. ये sustainable development पे हुआ था in the Johannesburg, South Africa. And 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss to global and regional and local levels. ठीक है ना? Current rate of biodiversity बढ़ाना है. अच्छा, now we are over with the chapter. There is a summary below down, and I suggest everyone to read your summary thoroughly because it happens to be the most important part of the NCERT as well. So look at this. This was the chapter. This was the whole chapter we finished. It's okay. Bye bye.